हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपका अपना चहेता नाता नवाबी गेमर ऑफ लखनऊ। और आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं एक और गेम प्ले लेकर के। एलन वेट 2। इसको हम लोग खेल रहे हैं लास्ट 4 to 5 डेज से। हम लोग इसको लगातार कंटिन्यू खेल रहे हैं। सुबह 8 से 9 बजे के बीच खेलते हैं, खेल रहे हैं इसको। और आज हम इसको आगे से फिर से आगे इसको और आगे ले जाएंगे जहाँ से कल हमने इसको स्टॉप किया था। एलन वेट 2 को, जहाँ पे हम लोग कल टनल में फंसे हुए थे और हमें टनल से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं टनल से हम लोग बाहर कैसे निकलते हैं। काफ़ी टेंस माहौल था कल खेल रहे थे। कल मैं ज़्यादा देर नहीं खेल पाया, मुझे पर्सनल काम आ गया तो मैं चला गया था। लेकिन आज मैं पूरा खेलूँगा, 9 बजे तक आज मैं पूरा खेलूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारा गोल क्या है? कंप्लीट द रिचुअल द प्रोजेक्ट है। चलिए रीच द मर्डर साइट। अब हमें यहाँ पे मर्डर साइट पे जाना है। मर्डर साइट कहाँ पे है देखते हैं मैप में कहाँ पे है। ये देखते हैं। ठीक है। और हमारा क्या है? कंप्लीट द रिचुअल इन द कोलैप्स। अब मैं जहाँ पे हूँ और मुझे जाना है कोलैप्स टनल में मुझे जाना है। चलिए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सामने कुछ है, देखो जरा। अरे यार, मार दिया इसने मुझे और मैं यहाँ मर गया। अगली बार मैं जाऊँगा तो पूरी फुल प्लानिंग से जाऊँगा। हेल्थ वगैरह मैं बना करके जाऊँगा। ध्यान नहीं दिया मैंने। स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करते हैं। अब लेते हैं यहाँ पे गन वगैरह जो भी है। अच्छा देखिए इसका क्या चीज़ है, देखो जरा। ये नहीं चाहिए। मुझे लगता है मेरा इतने से काम हो जाएगा। चलो भाई, ये हो गया। मैं यहाँ से कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा ये सब प्ले ना करना पड़े मुझसे। चलो इसको तो मैंने मार दिया है। क्या यहाँ पे कुछ है? यहाँ पे क्या है? क्या रहा है क्या? तो क्या आगे क्या? वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। क्या हो जाए? ये तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। क्या यहाँ पे कुछ है मेरे मतलब का? क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है। यहाँ पे तो मैं आया ही था।
पीछे जाना है, तो लेफ्ट तरफ में जाना है। इसका क्या रास्ता कहाँ से है? मुझे लगता है कि यहाँ से मैं आगे ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं सही जा रहा था। अब मैं फिर से यहीं पे ही आ गया हूँ। यहाँ पे मैं तो पहले भी आ चुका हूँ। अभी ये फिर से जाना है, को लेफ्ट टर्न में जाना है। तो यहाँ से कुछ रास्ता है, यहाँ पे कुछ है क्या देखिए। बैक में कुछ है। The plot element I found would drive the story forward. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it. I could imagine this murder cult performing their macabre acts beyond the collapsed tunnel. चलो मैं यहाँ खुला टनल में तो आ चुका हूँ। यहाँ पे शायद कुछ होने वाला है, हो सकता है यहाँ पे। The cultists laid the Casey novel onto the altar with reverence. Their twisted Bible. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. यहाँ पर कुछ है क्या? देखिए।
यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ है। Changing a plot element in a scene without being there was impossible. I'm awake. अब यहाँ पे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। कोलैप्स टनल पावर सप्लाई बोल रहा है। ये मुझे पता है। The scene changed with the story. Enter the unlock tunnel. Enter the unlock tunnel. इसको यहाँ पे करता हूँ। बटन को अनलॉक कर देता हूँ। The dark presence. Fuck! अरे निकल ले पतली गली से निकल ले यहाँ से भागने में घर में नहीं तेरी भलाई है। चलो भाई मैं निकल लेता हूँ पतली गली से। यहाँ पे मैं करता हूँ कि आजा भाग निकल भाग यहाँ से। मैं अंदर जाके सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को सेव करता हूँ। I couldn't hear the dark presence. It was gone. तो जा चुकी है। सेव अब मैं यहाँ करता हूँ फिर से। ये क्या था भाई? The tunnel was open now. I could get through. ये क्या हुआ? हुआ क्या इसके साथ? क्या हुआ इसके साथ?
यहाँ पे मैं आया। The new story beat fit the story perfectly. The tunnel was open now. I could get through. मैं यहाँ से टनल को ऑन कर लेता हूँ। Shit. चलो निकल लो, भागो यहाँ से, चलो चलो भाई मैं निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ से इसका कोई डार्क शक्ति है, डार्क पावर है जिससे पीछा कर रही है, तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं उससे बच के The dark presence. मैं उससे बच चुका, I बच had गया seen हूँ। it before. भाई I remembered now. बहुत ही हॉरर He's सीन always था out ये। there, hunting me. कि उसको मारने के पीछे पड़ा हुआ था इसके। अच्छा, इतनी डरावनी जगह पर मैं तो कभी अकेले जा ही ना पाऊँ। अब चलो चलते हैं यहाँ पे। अब हमें वो तांत्रिक क्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा। ये हमारा मिशन तो यही कह रहा है, यहाँ पे एक मर्डर हुआ था और ये हमें रिचुअल को फॉलो करना पड़ेगा। I had found the murder site. Somehow the victim's अरे ये तो heart was वही the है, key. ये तो वही है जो मर गया था स्टार्टिंग में। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से Something had इन्वॉल्व है, shifted. I felt an इस overwhelming कल्ट में closeness ये to इन्वॉल्व है, home. मुझको ऐसा लग रहा है। An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Now, Cauldron Lake. Who are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I had lived with Alice. It was out there. Waiting for me. ये गेम कहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, क्या इसमें हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये वहाँ से वहाँ पे चला गया है। चलिए भाई अगला चैप्टर देखते हैं, अगले चैप्टर पे क्या स्टोरी होती है इसकी। ये इस कल्ट का रहस्य तो आखिरी में ही जाकर के ही पता चलेगा, इस गेम में आखिरकार हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट टू द अपार्टमेंट इन द पार्लियामेंट टावर। चलिए, ये जो नंगा आदमी स्टार्टिंग से मुझे बहुत परेशान कर रहा है। देखिए यहाँ पे शायद कुछ मिल जाए खाने पीने को। यहाँ पे कुछ है क्या, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मुझे आगे बढ़ना होगा। ये मरा तो जंगल में था और ये आ यहाँ पर गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये जंगल जैसा लग रहा है? नहीं। चलिए भाई कुछ तो हो रहा है, कुछ समथिंग स्ट्रेंज। क्या लिखा है? राइटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड।
अनसेंस का लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे देखते हैं लाइट में क्या हो रहा है। Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning. The violent emotion of the act. Like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see. अब ये कहाँ पहुँच गए हम लोग? गेट टू द अपार्टमेंट पार्लियामेंट टावर। इसको टावर पे जाना है, इसके लिए जाके बाहर निकलना होगा। The station had changed. I was closer now. I'm a writer. I write. Writing is the key. Art is the key to find my way out of the dark place. I can't forget this. Don't you fucking forget this. I'm in the dark place. I'm outside time and space. Outside reality. But this is real. A nightmare dimension. An ocean of darkness. Remember, it's dark. चलिए भाई सब आगे चलते हैं। Energy can make art come true. Dreams and nightmares. Yes, I can use this. I need to use this. Hungry, monstrous things out there, plotting to stop me, devour me, become me. Oh no. चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये रही टावर, Parliament Tower. पार्लियामेंट Our टावर। home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Writer. Maybe he was a victim. Writer. Maybe he was a victim. Or maybe he was a victim. The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art for all to see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? चलिए चलते हैं यहाँ से। स्टोरी तो यार इतनी मिस्टीरियस स्टोरी होती जा रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या सस्पेंस है इसका। इस पर तो इस मूवी पर तो एक पिक्चर बन सकती है भाई। Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before.
Alice's video camera. No memory card inside. इसका मुझे ढूंढना है, मेमोरी कार्ड ढूंढना है इसका। फाइंड फोकल पॉइंट। मेमोरी कार्ड कहाँ हो सकता है इसका? यहाँ पे कुछ है क्या? देखिए Alice's memory card. है। मैं यहाँ पे जाके देखने जा रहा हूँ पिक्चर। देखते हैं यहाँ पे क्या होने जा रहा है। क्या रिकॉर्डिंग है मेरे लिए, देखो। When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do too sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan. And yet, it was a monster. कह रहा था इसके अंदर ही कुछ है इसके अंदर। क्या ये साइको है? He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now, when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. करके इसकी बार फोटो देखते हैं। Alice. Scratch was terrorizing her. फोटो क्या है देखते हैं। Why? फोटोज में इसके प्रूफ है, डार्कनेस आता है जो
और एलिस को मुझे ढूंढना है। एलिस कहाँ पर है? I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing. क्या हो रहा है इस गेम में? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे स्टोरी बढ़ रही है कुछ थोड़ा समझ में आ रहा है गेम में क्या हो रहा है, लेकिन अब तो कुछ समझ से बाहर हो गई है स्टोरी। गेम कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। लेकिन चलते हैं, गेम तो खेलना ही पड़ेगा, तभी आगे जाके इसकी स्टोरी को पता चलेगा कि आखिर गेम में हो क्या रहा है। वो हमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कि इस गेम को खेलने में बहुत ही मजा आ रहा है। Okay, let's recap what you've told us so far, Alan. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called the Dark Place. Yeah. It's like New York, but it's not New York. And can be reached from the bottom of Cauldron तो Lake, but जैसा it's मैं not कह रहा था really कि under the एक lake. तरह के पैरेलल And after all यूनिवर्स this में फंसा time, हुआ you've है, managed to get out. जिसको बोलते हैं डार्क Yeah. प्लेस। Yeah. वहाँ पर ये 13 But so साल से has फंसा your हुआ evil था। doppelganger. अब ये Mr. बाहर आ गया है, Scratch? Or is बाहर it आके the इसको dark बुलाना presence? स्टार्ट। Both. It's और interchangeable. ये अब तक इनको अपनी He's स्टोरी सुना Scratch when रहा he है। looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, मतलब कि मेरा the ये dark presence, इतना wants सा to समझ rewrite the में world मुझको in आ his गया है own कि image. Which डार्क प्लेस would तरह की be कोई in चीज़ your होती है image, जहाँ पे 13 साल के लिए आदमी as he ट्रैप looks रहता है। just like you. And turn 13 the साल world बाद into a कोई fucking आदमी nightmare. बाहर निकलता है। During Deerfest, वो नंगा which is आदमी जो scheduled था to take place in a वो couple मरा, of days. वो भी 13 साल तक गया मरा, फिर You got बाहर out आया। of the dark place और by writing a novel, ये भी the बाहर आया। pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time it... This will be back in 2010. Yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker,
I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. क्या Mr. ये Wake, अभी भी डार्क प्लेस में है? Alan, या इसका ये we've seen हेलुसिनेशन our है कि ये share वहां of के बाहर batshit निकल गया है? crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. It's insane. And there's so much of it. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter. The next chapter. The next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. Wake has a double. Mr. Scratch. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. चलिए भाई, यहाँ से मेरा जाने का टाइम हो रहा है। अब ये गेम मैं आज के लिए यहीं पर रोकता हूँ। और आज के लिए इतना बहुत होगा, क्योंकि ये इस गेम को थोड़ा खेलने में और कुछ समझने में भी थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे भी। आगे क्या करना है तो गेम ही बताएगा, लेकिन यहाँ तक की स्टोरी भी मुझको समझ में थोड़ी बहुत आ चुकी है। फिर अब यहाँ से समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अब चलेंगे, कल खेलेंगे। ये पेज अपने पन्ने छुपा रहा, देखते क्या कह रही है। Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. Now, this is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time.
in the hands of the cult of the tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. Standing inside the trailer at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the cult of the tree. Her mind reeled from what the horror story was now claiming about her life, her past. She didn't accept it. She stepped out of the trailer. She needed air, but she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find that, then we find the cult. चलिए अब चलते हैं, इस गेम को यहीं पे एंड अप करते हैं। कल दोबारा फिर मैं आऊँगा, इसी इसी सेम जगह से मैं इस गेम को फिर से स्टार्ट करूँगा और कल देखते हैं इस गेम में क्या होता है, क्योंकि इस गेम को ज़्यादा देर खेलने से भी थोड़ा सा माइंड पे असर पड़ता है। असर क्या पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए निकलते हैं इस गेम से, और आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड डे।